ग्रन्थस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के गीता के इस प्रवचन में। We welcome all of you to today's Bhagavad Gita class. We are studying chapter 4, verse 38. 37 तो हो गया ना। ज्ञानाग्नि वाला तो हो गया था ना। तो यहाँ भगवान ज्ञान की महिमा बता रहे हैं और ये ज्ञान मार्ग का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये कर्मयोग से उपलब्ध ज्ञान है। तो पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था यथै धांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जिस प्रकार से ईंधन को अग्नि जला देती है उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि So कर्म का सर्वनाश, सब कर्मों का
The fire of knowledge destroys all the karma. कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। The person becomes free from bondage to karma. उसी ज्ञान की महिमा बताते हुए यहाँ फिर So Bhagavan is glorifying that Gyan, परिणाम क्या and है। here he is telling what is the final result. इस श्लोक में न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने Translation: वाली In this world, there is nothing at all as जिसने इस purifying ज्ञान as और wisdom. कर्म योग से To पूर्ण one fully सिद्धि perfected प्राप्त की through है, Nishkam Karma Yoga, समय आने पर that सिद्ध wisdom होगा। is revealed to the self of its own accord in due course of time. तो यहाँ So ज्ञान here की पवित्रता के बारे में कहा है। Bhagavan is भगवान ने speaking about the purity of ज्ञान की तुलना knowledge. अग्नि से की In थी। the previous verse, he had अग्नि को पवित्र माना compared जाता है। knowledge with fire. अग्नि Fire is considered pure. Fire, को पवित्र kushagras, माना जाता है। they are considered pure. और हम अपने प्रयोग में भी देख सकते हैं कि कोई भी And घड़ा है जो उसको we अग्नि में can डाल दो तो उसकी see गंदगी in our experience also, if you put any object in fire, बर्तन its अग्नि में डाल impurity gets शुद्ध burnt. हो जाएगा। If you put any vessel in fire, लेकिन it अग्नि becomes से भी pure. ज्यादा But पवित्र करने वाली more purifying जो than है वो fire ज्ञान है। is knowledge, क्योंकि अग्नि तो भौतिक रूप से because ही शुद्ध करता है। fire purifies only ज्ञान at a material level, हमारे but अंतरंग की knowledge शुद्धि करता, आंतरिक शुद्धि purifies करता। us, our chitta, purifies us internally. संसार में शुद्ध करने वाली अनेक चीजें हैं। जल को भी In शुद्ध this करने world, there are वाली many है। things that purify. When जैसे water स्नान is a करते हैं, purifying agent, we कपड़े take bath धोते with हैं, water, कपड़े धोते हैं, we wash clothes with water, we wash शुद्ध vessels कपड़े with धोते water. हैं। If we have to purify anything, we use तो ये तो water. बाह्य शुद्धि है। So this is external purification. आंतरिक शुद्धि के लिए Internal, अनेक उपाय शास्त्रों में for बताए हैं। internal purification, many जैसे व्रत things करो, are told in Shastra, उपवास करो, like doing दान vrata, यज्ञ करो, दान fasting, दो, yajna, तीर्थों का charity, स्नान करो, taking bath in place of pilgrimage, भोजन कराइए दूसरों को, गरीबों को वस्त्र दान कीजिए। giving तो free इस food, प्रकार के अनेक clothes to poor कार्य people. शास्त्रों में बताए हैं जो In this way, there are many हमारे पाप को activities काटते हैं prescribed in और यही Shastra. शुद्धि है They और cut हमको off शुद्ध our करते हैं। sins, because लेकिन ये sins जितने are भी impurities. उपाय हैं So these शुद्धि के, activities, they purify us. But ये all these activities पाप which को तो purify काट us, देंगे, they लेकिन पाप का जो can मूल है destroy the sin, जिसके कारण but व्यक्ति पाप करता है, the root cause of the जिसके sin for कारण which हमारे अंदर human being अपवित्रता performs the आती है, sin, due उसको to which जलाते हैं। we get impurity. So तो these इसी प्रकार से activities है, जैसे cannot आप घास को remove the काटते root हैं, cause. It is जंगल like, में suppose you अपने घर के cut आसपास में grass घास लगाते हैं, near some people, तो they sow उसको grass हफ्ते in 10 दिन में near काटना their पड़ता है, home. So every week काटते or हैं, 10 फिर days वो they have जल्दी to cut it off. But उसको if you साफ cut करते it, रहना पड़ता है। then it grows again. So you have to do it regularly. तो इसी प्रकार से जो So शुद्ध in करने this way, उपाय हैं the उनको आप other कीजिए, methods उनसे आपकी शुद्धि होगी, you अवश्य ही can होगी, ऐसी नहीं है कि नहीं होगी, you लेकिन can apply that. उसकी ये कोई It will purify you. It is not that it गारंटी won't नहीं purify है you, कि but there is no आप guarantee दोबारा से अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, that you will अशुद्ध not नहीं make करेंगे, yourself impure again, or you will हिंसा not भ्रष्टाचार perform sinful नहीं करेंगे। activities again, or you will not engage in corruption इसका again. इसकी कोई There निश्चित is नहीं है। no guarantee that you will और उसका not कारण repeat क्या है that कि sinful सबका activity. मूल कारण जो है, जो And इन what is the सभी दोषों reason? का, The root cause of all these अपवित्रता sins, का जो these मूल कारण defects, है these वो है अज्ञान। impurities is Agyan, जब तक हमारे ignorance. अंदर अज्ञान रहेगा, As long as we have तब तक ignorance, हमारे अंदर गलत कार्य करने की संभावना बनी रहेगी। till then there will be तो अब possibility कोई कह सकता for है us कि to ज्ञान तो do बहुत लोगों wrong के पास होता activity. है, Now somebody may कोई say वेद that बहुत many पढ़ लिए people हैं, have गणित में Gyan, विद्वान है, knowledge. कोई ज्योतिष का Somebody is विद्वान है, expert in कोई mathematics, दर्शन somebody in में विशेषज्ञ Jyotish, है, कोई somebody in विज्ञान में physics, विद्वान है। chemistry, computer. तो क्या वो पवित्र हो जाते हैं उस ज्ञान से? So do they उनके पास भी तो, वो भी get तो ज्ञान ही purified कहाते by हैं, that हम उनके पास knowledge? जाते हैं, उनको पैसा भी दे के, They are उनसे also सलाह called लेते हैं, Gyanis, knowledgeable people. People उनसे pay them पूछते रहते money हैं ना, and वो ज्ञानी है तभी तो उनके take पास जाते हैं। consultation. So they are तो क्या knowledgeable. That's why वो people ज्ञान approach उनको them. पवित्र करता है? So does that knowledge purify them? तो यहाँ
उस ज्ञान की बात नहीं हो रही, वो So भौतिक here ज्ञान we है, are not talking of प्राकृतिक that ज्ञान है, प्राकृतिक knowledge. संबंधी ज्ञान है। It तो is उस just ज्ञान से material knowledge. ये आंतरिक पवित्रता नहीं आती है, That knowledge does not lead to तो उसको internal purification. अपरा ज्ञान बोलते हैं, अपरा विद्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जिस ज्ञान की That is बात हो apara रही है jnana or वो apara अपरा विद्या vidya. है, Here what we are talking ये about is आध्यात्मिक para ज्ञान है। vidya. This is spiritual knowledge. क्योंकि हमारी जो मूल समस्या है वो Because our main आत्म problem संबंधी अज्ञान के is कारण है, our own ignorance और related to our own जीव को self, अपने आत्मा related का, to Atma. आत्मा का We स्वयं का ज्ञान उपलब्ध नहीं है, do not have knowledge of तो इसलिए ourselves, the Atma. हम That is why अपनी पहचान इस शरीर से बनाते हैं, we identify और ourselves with this उसके body. कारण फिर राग द्वेष, Due to that, then अभिनिवेश, there is raga, dvesh, संदेह, attachment, संकोच aversion, आदि, abhinivesh, and सब then all भय, kinds of other wrong ये activities. पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये So then अच्छा there are लगता है, ये अच्छा dualities. नहीं We like लगता, this, we don't like ये that. मेरा शत्रु है, ये मेरा This मित्र is है। enemy, this is friend. तो ये सब प्रकार के द्वंद्व जो हैं वो उसी के All कारण these पैदा होते हैं। dualities are due to that only. तो इसलिए जब तक उस अज्ञान को विदूरित नहीं किया So जाएगा, unless तब तक ये we दोष हमारे अंदर get बने rid of रहेंगे। that ajnana or ignorance, these defects will तो remain. इसलिए उसका जो मूल है That is उसका why कुठाराघात करना है। सब दोषों we का जो have to मूल है, attack the root जब तक itself. उस पर कुठाराघात नहीं होगा, जब तक उसको नहीं काटा जाएगा, Unless we uproot तब तक ये समस्याएं the बनी root cause रहेंगी। of this problem, तो आप till then रोज these problems will अच्छे remain. काम करते रहिए, दान So दीजिए, you can यज्ञ try, कीजिए, keep trying something और else, प्रायश्चित giving कीजिए, charity, उपवास etc., कीजिए, व्रत रखिए। doing तो इन prayashchitta, सब से आपकी fasting, शुद्धि होगी, लेकिन वो जो different vratas. आंतरिक So they will शुद्धि purify you, का जो मूल but कारण है the वो main आपको प्राप्त नहीं cause of होगा। the internal purification, we तो will उसी के not लिए get that. भगवान यहाँ कहते हैं कि ये जो For ज्ञान that है only Bhagavan is telling here that ये this जैसा jnana, पवित्र करने this वाला और knowledge, कोई there is nothing as purifying वस्तु नहीं है। as this. और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो ये And कर्म how योग से ही we will होता get है। this कर्मणो knowledge? ह्यपि That will be by कर्म Karma योगे Yoga. संसिद्धि मास्तिता जनकादे। पिछले अध्याय में भी भगवान ने कहा था In the कि previous chapter also, Bhagavan had said कर्म से ही that सिद्धि को प्राप्त होता है। Janaka, etc., they also achieved perfection तो by karma उसी only. को यहाँ पर बताते हैं So he is telling कि about that यह ही only. योग संसिद्ध तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। तो व्यक्ति जो है वो स्वयं ही इसको So प्राप्त human करेगा। being will get it himself only. तो योग संसिद्ध का मतलब यहाँ योग शब्द से Yoga अष्टांग Samsiddha योग means नहीं है, here yoga does not refer to Ashtanga Yoga. यहाँ योग शब्द का अर्थ कर्म योग का Here ही है, yoga refers to Karma Yoga only. क्योंकि कर्म योग का ही प्रवचन Because चल रहा है। the context तो जैसे is पहले of कहा Karma था Yoga कि only. सर्वम So like कर्मणि Bhagavan said earlier, कर्मणि परिसमाप्यते। तो जो तीन ज्ञान प्राप्त करने के या मोक्ष प्राप्त करने के जो तीन मुख्य मार्ग भगवान ने बताए so हैं, the three कर्म main योग, ज्ञान योग, paths भक्ति योग, that Bhagavan prescribed, तो like उसमें से Karma यहाँ Yoga, कर्म Jnana योग Yoga, की Bhakti बात चल Yoga. रही है। So here he is योग talking शब्द का about प्रयोग Karma भगवान Yoga, ने and पिछले अध्याय में भी कर्म योग के Yoga लिए ही किया था। word ऐसा was used in the second chapter also for Karma Yoga only. तो इसलिए हमें जानना पड़ेगा कि यहाँ जो योग शब्द है वो So कर्म here योग we के have लिए to है। understand that yoga तो refers कर्म to योग से सिद्धि Karma की Yoga प्राप्ति only. होती है, तो उसकी So सिद्धि क्या Karma है? Yoga उससे ज्ञान brings प्राप्त होगा। siddhi or तो perfection. जब What तक is the ज्ञान प्राप्त नहीं perfection? होगा तब तक That we समस्या get Gyan, बनी रहेगी। knowledge. अज्ञान के कारण ये Because सब unless we समस्याएं get आती this हैं। knowledge, all problems will be there due to यहाँ पे एक ignorance. बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ था सोक्रेटिस, उसका नाम आपने सुना होगा। Socrates was उसका एक a बहुत great महत्वपूर्ण वाक्य है philosopher. So जिसमें वो कहते he हैं कि ज्ञान ही made a वीर, very नॉलेज इज great वर्च्यू। statement. He says knowledge is तो उनका virtue. ये बहुत बड़ा सिद्धांत था जिसको बार So बार he दोहराते रहते थे। उनका had कहना this था कि great जिस philosophy. He व्यक्ति में always ज्ञान repeated होगा this, that knowledge वो is उसमें virtue. अवगुण नहीं रह He said सकता। that one who has knowledge, he cannot जिसमें ज्ञान have होगा वो गलत bad काम कार्य quality. नहीं कर सकता। One who has knowledge, he cannot perform wrong activity. ये उनका सिद्धांत था। This was तो his उनकी बात सही है, philosophy.
So और his गीता में भी भगवान statement इसी is बात को correct, बोल रहे हैं and कि here जो in ज्ञान Gita है, also Bhagavan is जैसा मैंने कहा, ये भौतिक ज्ञान नहीं है, repeat is आध्यात्मिक also ज्ञान telling है। that. But as I said, और वो the आध्यात्मिक knowledge ज्ञान that Bhagavan is talking भौतिक about here ज्ञान is नहीं है। spiritual knowledge, not material knowledge, and आपको also not just theoretical spiritual knowledge, but जैसे experiential spiritual knowledge. कोई आपसे कहे So, कि like मुझसे कुछ suppose अग्नि में somebody जोत tells लगाना, you आप जल जाओगे, उसको अनुभव नहीं or है, tells a child that समझ don't नहीं है, touch लेकिन जब you उसका this हाथ fire, लग जाएगा आग में you'll get burnt. और आग उसको But जलाएगी, he puts तो finger उसके in that बाद and he उसको gets कहने की burnt. जरूरत नहीं Then पड़ेगी। after that you don't have to tell उसके him. बाद वो कभी Then जानकर तो कभी intentionally he आग will में हाथ नहीं never डालेगा। put the hand in गलती fire. से हो जाए वो बात अलग है, By mistake it may वो जानकर happen, नहीं that's करता। a different point. तो But इसीलिए intentionally he will not do that. हमको ज्ञान है कि हमको सत्य बोलना चाहिए, So we have ये सब knowledge जानते that we हैं, should लेकिन ये speak the केवल truth. शाब्दिक ज्ञान है। But this is जब just हमको वास्तव में ये समझ theoretical में आ जाएगा कि knowledge. सत्य बोलने When से we will हमें understand लाभ होता है, actually that असत्य बोलने से we हमारी get हानि होती है, benefited हमको by घबराना पड़ता है। speaking the truth कि and अगर मैं we अग्नि suffer से बोल रहा loss हूँ by speaking lie. तो मैं सुरक्षित Similarly, हूँ, और अग्नि में मैं अगर हाथ लगाऊं if we तो understand मुझे that कष्ट होगा। by putting hand in the तो fire इसी we will प्रकार get जब burnt. हमको ज्ञान हो जाएगा कि असत्य बोलने से वास्तव में So when हानि we'll get होती the है, तो मैं knowledge किसके that पीछे हो रहा हूँ। actually by speaking lie, I am अग्नि से युद्ध sowing में तो seeds उसका of फल आपको misery तुरंत only. दिखाई देता है, In case of fire, you see the इसलिए आप result समझिए immediately, so you कि understand. असत्य बोलना But या किसी को speaking झूठ बोलना lie or cheating या दुराचार करना, or ये फल engaging in तुरंत नहीं corruption, आता है। तो you don't इसलिए get हम the मानते हैं result कि निश्चित immediately. हमको लाभ हो रहा है, So we think that तात्कालिक no, this is लाभ lies, दिखाई speaking देता lies है, benefiting me. इसलिए हम उसको करते हैं। So temporarily you अगर may feel the तात्कालिक benefit. हानि दिखाई That's why you दे do that. तो हम नहीं But करेंगे। temporarily, immediately, if you feel some इसीलिए loss, लोग then you will not do शराब that. पीते हैं, शराब So पीते that's हैं, why people smoke नशे से cigarette, खराब they होते हैं, drink क्योंकि wine, तात्कालिक कुछ लाभ they दिखाई देता है उससे, spoil their health और जब because हानि होती है वो तुरंत समझ में immediately आता है। they feel some benefit, तो ज्ञान but का the मतलब है loss कि happens ये over a वास्तव में period ये of ज्ञान time. होना। तो जिसको So ये here ज्ञान हो jnana means जाएगा having तो वो actually this realization, ना this सिगरेट knowledge. पिएगा ना शराब पिएगा, One उसको who इसकी has जरूरत that, नहीं पड़ेगी। he will not smoke cigarette, he will not drink wine. तो क्योंकि वो ज्ञान जो है So उसके this संदेह jnana को, or संशय को knowledge, निवृत्त कर देगा। this jnana, it will जब हमारे अंदर remove अज्ञान his रहता doubt. है, When we और have अज्ञान भी कई प्रकार का ignorance, है। अज्ञान and में ajnana or ignorance also ज्ञान has है two नहीं किसी meanings. विषय में, One is that और we do दूसरा not है have कि knowledge about गलत ज्ञान something, है, उसको हम another गलत is that बोलते हैं। we have wrong knowledge. तो वास्तव में जब हम अज्ञान That को is दूर also called करने का ajnana. ट्राई So करते हैं actually, when we talk about ajnana, गलत it ज्ञान से, generally means having the तो wrong अज्ञान knowledge. होने के And कारण जो है मैं wrong गलत knowledge, निर्णय लेता हूँ फिर, due to wrong knowledge, I take wrong और decision, उसका फिर मेरे को and प्रायश्चित then करना I पड़ता है। have to लेकिन suffer जब मेरे को due to सही having ज्ञान taken होगा, wrong decision. But when I will जब मेरे have को the ये बात right समझ में आ knowledge जाएगी and I कि will वास्तव में understand मैं that आत्मा हूँ, actually I am Atma, शरीर से भिन्न हूँ, I am different from the body, और and ये एक अनित्य वस्तु मेरे को body is a एक temporary कपड़े object के तरह मिली which हुई है, I have received like a इसका मैं लाभ cloth उठा or सकता हूँ, garment, and और I can take कर्म advantage करने of से it. कर्म का फल मिलता है, And by doing और उसका karma, I get the परिणाम मुझे result of मिलता है। karma. तो ये ज्ञान जब मेरे को हो जाएगा, वास्तविकता में When इसका I will अनुभव have हो this जाएगा, तो मैं correct फिर गलत knowledge, कार्य करूँगा नहीं, मैं फिर then I will not मेरे अंदर engage in कर्म wrong activity. भोक्तृत्व की भावना नहीं आएगी, Then I will not have the feeling of और doership and मेरे enjoyership. पास में जो परिस्थितियाँ पैदा होंगी And उसमें the मेरा मन विचलित situations नहीं होगा। that I will face, तो they will not पवित्र disturb my कहने का mind. मतलब यहाँ पर यही है। So, telling पवित्र purifying, शब्द जो है purification पवि means और this tra, only here. दो चीजों से बना है। Pavitra is made with pavi and पवि tra. कहते हैं वज्र को, Pavi refers to इंद्र का Vajra, अस्त्र है, the उसको weapon of वज्र कहते Indra हैं, that is called Vajra. वो बहुत शक्तिशाली है। It is very powerful. और त्रा माने जो रक्षा करता है। And Tra means that protects. तो यहाँ पवि वज्र का So मतलब है here, कर्म रूपी वज्र, Pavi or Vajra, it refers पाप to रूपी वज्र। karma or तो papa, sin. पवे त्रायते इति पवित्र, जो इस पाप रूपी वज्र से हमारी रक्षा करता है, That पवित्र है। which वो ज्ञानी, protects us from ज्ञानी this नहीं पुरुषम पवित्र। Vajra like sin. और दूसरा यहाँ सदृश, सदृश का मतलब होता है समान,
Another here is वास्तव में point is शरीर का sadrisha, which मतलब means दूसरा ही like, होता है। दृश्य saman, मतलब दृष्टि, आंखें। but drish also ज्ञान की means आंखें होती drishti हैं। or eyes, like having eyes of ज्ञान knowledge. पवित्र करता है, So ज्ञान knowledge आपको purifies दृष्टि us, देता है, and दृष्टि ही knowledge ज्ञान gives है। us vision also. नहीं तो आप किसी चीज को देखते हैं Jnana gives आर्टिफिशियल us ज्ञान में, तो drishti आपको or पता नहीं vision. चलेगा कि क्या है। आपके सामने कंप्यूटर या आपका सेल फोन रखा हुआ है, आपको ज्ञान है कि ये क्या वस्तु है, तो उसका आप उपयोग करते हैं, लेकिन So if you have आपको a cell phone or देख ही नहीं computer, रहा we है, use उसकी that. पहचान ही But नहीं if we कर रहा have है। never seen that, we don't know about it, you can keep seeing it. तो इसी प्रकार से हम अपने जीवन में चलते हैं, In this लेकिन अगर way, हमको ज्ञान नहीं we होगा तो move ahead in life. उसमें दृष्टि But नहीं if we do आएगी। not have knowledge, then actually we इसलिए do not ज्ञान को have भी vision. अंधकार कहा We है, are blind. That's why और ज्ञान भी ajnana or प्रकाश है। ignorance is known as तो darkness. सदृशन का And मतलब है कि gyan gives ज्ञान light. जो है उसके, वो हमको एक दृष्टि So sadrisham here means प्रदान that करता है, jnana or knowledge gives और us a vision, हमारी रक्षा eyes, करता है। and it protects us. क्योंकि रक्षा कैसे करता है? How हम does कोई it गलत protect कार्य us? करेंगे ही नहीं, We will now, हम because इसलिए now भी we will not engage in wrong जिम्मेदारी ले activity. रहे कि अगर मैं गलत कार्य करूंगा तो मेरे को सरकार जो है वो दोषी ठहराएगी, जेल भेजेगी या पुलिस पकड़ेगी। इस तरह से नहीं, मैं अंदर से ही गलत It कार्य is करूंगा not that I am not doing तो wrong मेरे को activity तुरंत out of fear of कोई getting caught. नुकसान But नहीं actually, होगा। internally, I don't want to do the wrong तो activity. ये ज्ञान का I मतलब know है। it is not good for me. लेकिन So this is what jnana means. कर्मयोग करने से सिद्धि जो है वो तुरंत नहीं हो But जाती the है, siddhi or perfection that we get उसमें by समय karma लगता yoga है। is not immediate. तो इसलिए It takes time. कालेन आत्मनि विन्दति। तो समय क्यों लगता है? क्योंकि So हमारी why does it take time? आसक्तियां रहती हैं, उनको That छोड़ना is पड़ता है, because we have attachments. एकदम We से have होता to नहीं give है। them up, and we are not able to give them up ये बात समझ में immediately. आना कि कर्म का फल Now, मेरे को भोगना getting पड़ता है, this point, understanding इसलिए मेरे that को I गलत have कर्म to नहीं करना पड़ना suffer the चाहिए, result of सुनने के karma, बाद भी so I हमको should ज्ञान not ठीक से do the आता wrong नहीं है। activity. Even after hearing, it does लेकिन not अगर fit हम in our mind कर्मयोग के सिद्धांतों properly. का पालन करते But हैं if we actually तो धीरे 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 follow धीरे the हमारी siddhantas of शुद्धि karma होगी, yoga, then और slowly हमारी we will जितनी become शुद्धि होगी purified. उतनी हम आध्यात्मिक चीज़ों को And समझने लगते हैं। as we become purified, जितना we हमारा हृदय start शुद्ध होता है understanding the spiritual उतना ही subject. हमको आध्यात्मिक चीज़ें देर से The समझ में more आती हैं। our heart gets purified, the तो ये हमारे more अंतःकरण को it शुद्ध take the करता more है, time it takes. और अंतःकरण का शुद्धि का मतलब क्या है? कि हमारी आसक्तियों को मिटाता है। Purification इसलिए of ये the बोलते हैं कि chitta means दान our पुण्य देना, asaktis go away. कुछ So सेवा doing करना, this yajna, charity, तो इससे क्या seva, होता है कि हमारी आसक्ति कम होती है, so what happens is that हमारे अंदर our एक भाव attachment आता है कि सब reduces. कुछ मेरे लिए ही We है, get this bhava मैं that दूसरों के लिए भी करूं, everything is not इसलिए for श्राद्ध me. का समय I चल should रहा do है, something for others also. भगवान Like को देने currently के लिए this मैं पिंडदान Shraddha करूं। time is going on, तो so इससे I हमारे should अंदर do में Pindadan कुछ for the आसक्ति घटती ancestors. है, So it reduces our और attachment हमारा हृदय थोड़ा खुलता है। and our ज्ञान heart के कारण, आसक्ति opens के up कारण हमारा slightly. हृदय Due to संकुचित हो जाता है। ignorance, due to attachments, our heart becomes तो वो जब constricted. खुलता है तो फिर So when ज्ञान it को opens ग्रहण up, करने की उसमें then क्षमता आती है। then it becomes capable enough ये बात to हमको फिर समझ में आती receive है the कि knowledge. मैं नित्य हूँ, We आत्मा नित्य है, understand मेरा that जन्म we नहीं are होता, मेरी eternal, मृत्यु नहीं होती है, we are not मेरा born, शरीर we नित्य don't है, die, इसलिए हमारा and संबंध body जो is है वो temporary. वास्तव में है नहीं, So we actually do not have the ये एक relation. माना हुआ संबंध है। It is just something that we जितने have संबंध हैं assumed. संसार में वो एक All माना the हुआ है। relations in the world, they जैसे have just assumed them. कि आपके पिता You have been को told नहीं that पता है, he is your father. How do you know? आप मान ही रहे हैं ना। You have just accepted that. तो उसी प्रकार से So संबंध in माने the हुए same हैं, way, the relations, बनाए हुए हैं। these relations are all assumed, they are all तो जब temporary. शरीर ही अनित्य है तो So शरीर से when body itself क्रियाएं is करेंगे temporary, then ये all the अनित्य होंगे, activities that we do with उनका body, फल भी अनित्य they are होगा। all temporary only, तो and they इसका will give मतलब वो जो temporary results भाग only. नहीं है वो बचेगा नहीं, तो फिर हम And उसके लिए मेहनत temporary क्यों करें? means it won't survive. So why am I working हम hard for ऐसी that? वस्तु के लिए मेहनत क्यों नहीं करते हैं जो टिकाऊ है? Why not work hard for something क्योंकि that हम तो is नित्य हैं। eternal? Because we are eternal. तो ये ज्ञान जब हो जाएगा, जब हम इस So कर्म when we के get ज्ञान this को समझ knowledge, जाएंगे, when we understand this इससे हमारी science of शुद्धि karma, होगी। यही कर्म योग, ये जो योग that will give शास्त्र us है, perfection. यही सिद्धि है। इससे फिर
हमारे अंदर इस बात की अनुभूति, यह बात हमारे अनुभव में आने लगेगी, then we will start experiencing this. उसके लिए समय लगता है, इसलिए कहा And that कालेन है। time, और ये ज्ञान जो है ये आपके अंदर प्रकट होगा फिर। then you will get this knowledge. This knowledge will ज्ञान तो अंदर है ही, कोई ज्ञान awaken. कोई ऐसा नहीं है This कि knowledge is there हमको बाहर inside. से It इसको is देंगे not कि that मैं आत्मा we हूँ, have to इसलिए मैं get ही it हूँ, from outside. I am ये बाहर Atma, से I नहीं am not आएगा। this body. This will not come from outside. तो मैं हूँ, मेरी सत्ता है, So I am, I शरीर से exist, भिन्न हूँ, and I am इसको different बाहर से from the देंगे body. ठूसा नहीं जाएगा, तो वास्तविकता So है, इसको this knowledge आत्मज्ञान does not have to be बोलते हैं। imposed from इस outside. समय This is the अज्ञान के reality. कारण मैं इसको समझ Due नहीं to पाऊंगा, ignorance, I am not इसलिए कहते understanding हैं कि this. आत्मनि विन्दति, कि आत्मा में, मेरे आत्मा का अर्थ अंतकरण कीजिए या अपनी आत्मा ही कीजिए, दोनों तरह से ही समझ सकते हैं। तो वो मेरे को समझ आ जाएगी कि मैं So I will आत्मा हूँ। understand that I am Atma, और जब ये समझ आ जाएगी, and when I will understand this, मैं then कोई भी सकाम कर्म नहीं करूँगा। मैं क्यों करूँगा? I will not do any sakama karma. लगेगा कि ये सब मेरे बाहरी वाली चीजें हैं। और स्वयं उन्होंने कहा तत्स्वयं, तत् माने ज्ञान, जो ऊपर ज्ञान है उसके लिए तत् शब्द का प्रयोग किया। स्वयं माने So for अपने आप। jnana, that word is कहने used. का अर्थ है कि Swayam ये means ज्ञान on his जो है own. ये उपदेश वाला ज्ञान नहीं है। The point is that this jnana तो is पहले not that भगवान of ने कहा था कि upadesh. तद्विद्धि प्रणिपाते Like न Bhagavan परिग्रह told earlier, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, कि आप ऐसे ज्ञानी के पास जाइए, so he said that you go प्रणाम to कीजिए, such a उसमें बैठिए, jnani, सेवा कीजिए, you pay वो obeisances आपको to him, उपदेश you ask करेगा। questions and do तो वो एक seva, अलग he will विधि है instruct you in knowledge. So उपदेश that देने is की। a different और ये method जो of विधि giving है upadesh, ये उपदेश वाली instruction. नहीं है, But what here ये Bhagavan तो is saying, योग that is से ही not है, of instruction, जो श्री that कृष्ण is ने by शुरुआत में yoga, कही कि कर्मणा एव what he said अधिकारस्ते, earlier, कर्म से ही सिद्धि होगी। that you will get siddhi by karma और only. ये कर्तव्य कर्म करने से, कर्म योग By का for पालन doing करने this से ही duty, ये ज्ञान karma yoga, स्वतः सिद्ध होगा। this gyan, you यही will get बात it. समझने वाली है। इसी के लिए You will भगवान ने perfect in कहा it. था सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते। That's why Bhagavan had कर्म said की परिसमाप्ति है, यानी कि उसका जो फल होगा वो ज्ञान में that होगा, the result of the karma will be किसी in उपदेश से jnana. नहीं है, So that is not by some instruction, ये स्वयं ही है। that is on its own. तो इस श्लोक का यही अर्थ है। अब इसके This बाद is what this verse फिर means. वो Now, बता रहे after हैं this, then he says कि ज्ञान प्राप्त करना हो, that if you have to get उपदेशात्मक ज्ञान है, knowledge तो by उसके लिए instruction, पात्रता क्या है? then what is the qualification? तो उसके लिए अगला श्लोक बोलते हैं भगवान। For that, he speaks the next verse. और ये जो अगला श्लोक है इसका संबंध जो And पहले कहा this उन्होंने verse तद्विद्धि is प्रणिपाते connected with what he said earlier, सेव्य, उस Tadvidhi श्लोक से ही इसका Pranipatena. It संबंध is है। connected with that verse. तो इसमें कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम मचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु है, जो इस निष्काम कर्म योग की साधना में एक निष्ठ है और जिसकी इंद्रियां One who is पूर्णतया endowed with संयमित faith, हैं, who is singularly वह devoted to this ज्ञान प्राप्त practice of करता है Nishkama Karma, और इस ज्ञान and के whose साथ साथ senses are fully regulated, तत्काल attains परम wisdom. शांति प्राप्त And on करता the है। realization of such wisdom, तो that यहाँ person immediately obtains supreme ज्ञान peace. प्राप्त करने का जो मुख्य गुण उन्होंने बताया, So here, मुख्य योग्यता the जो main थी, वो qualification that he says about कहते हैं कि getting jnana श्रद्धावान is लभते Shraddha. ज्ञानम, कि जिसके अंदर श्रद्धा है So he says that one वही who has ज्ञान प्राप्त करता Shraddha, है। only such a person can get jnana क्योंकि or अगर knowledge. आप Only one who has faith, किसी only की he बात can get सुनते हैं, this. किसी का प्रवचन सुनते हैं Because if और उसमें you श्रद्धा listen to नहीं है, somebody's instruction तो and you do not आपको have चाहे उसका faith in बोलने that के ऊपर कोई person, फर्क नहीं then पड़ेगा, whatever he is speaking, it कहेंगे will कि not affect you. बक बक करता है। You may just think that तो he is इसलिए simply श्रद्धा blabbering. होना बहुत आवश्यक है। That is why it is essential to और have faith. श्रद्धा का क्या अर्थ है? And what this श्रद्धा faith का means, अर्थ है कि this faith जो means शास्त्र का विषय है
here it refers to having faith in the subject of Shastra or in the words of Guru, in the instruction of Guru. उसका आपको अनुभव नहीं है, This is what Shraddha means. अनुभव हो जाएगा You तो don't फिर have आपकी experience आवश्यकता of नहीं that, उसको because if समझाने you की। have experience, then there is no need to instruct. तो उसको इसी प्रकार है कि So it is like कोई माँ अपने छोटे बच्चों को कहती है कि आग के mother पास मत tells जाओ, her नहीं तो small जलने child में कष्ट that होगा। don't तो touch जब वो fire, मान लेता है otherwise तो you उसको will भी get अनुभव burnt. नहीं है कि हाथ So he just पे हाथ accepts what लगाने mother में has कष्ट said. होगा, He लेकिन doesn't उसको have मान लिया experience होगा of having कि been मुझे burnt by हाथ touching लगाने में fire, कष्ट होता but है। he has accepted that तो दूसरे statement बच्चों को भी कह that सकता है कि by आपको हाथ touching नहीं लगाना है, fire, माँ ने कहा है I'll ऐसे get burned. ऐसे So he करके। can instruct other अभी उसको his friends अनुभव है also लेकिन उसमें that विश्वास don't नहीं touch होता है। fire because my mother has said you will get burnt. और अगर So he has विश्वास no नहीं होता experience, जैसा but कि he बच्चों has को होता है तो faith वो लगा in के mother's देखेंगे, तो statement. बच्चों की But आदत होती है nowadays, कि as वो we see, कहोगे children don't have तो faith. जरूर करेंगे, So whatever you tell them not to do, they will definitely do that देखना चाहते हैं कि मना क्यों कर because रहे हैं, they want to experience, अनुभव check लेना why चाहते हैं। am I being तो forbidden अपना एक from doing this. अहंकार They also have their ego. बनता है, तो उसको दिखाना चाहते हैं कि मेरा So they also want to विश्वास कर show ले, मैं their ego तुम्हारे कहने से थोड़ी करता हूँ। that I also have my own independence. Why shall I do everything as you say? तो श्रद्धा का मतलब यही होता है। So Shraddha means this only. और श्रद्धा भौतिक विषय में भी हो सकती है, Shraddha आध्यात्मिक विषय can में हो be सकती in है। material subject, यहाँ in पर जिस spiritual श्रद्धा की subject. बात हो रही है वो Here the आध्यात्मिक Shraddha विषय that में Bhagavan is ज्ञान से explaining ही is प्राप्त refers करनी to होगी। spiritual subject because that is the context श्रद्धा here. सभी की That कहीं is ना the कहीं discussion. होती है। Everybody has Shraddha or faith in something or the other. तो जो भी व्यक्ति कुछ So भी करता है any person, whatever he उसमें कुछ ना does, कुछ श्रद्धा रहती he है, has some faith in that. He has Shraddha उसमें in उसका that. विश्वास रहता है कि मेरे लिए अच्छा है He इसलिए has करता faith हूँ। that this is good for हम me, एक so I am कार्य doing करते हैं, this. उसका परिणाम हमको पता नहीं होता, फिर भी हम We करते do हैं, something, but we do not know what will be the result, but विश्वास still होता we है। do that because we have faith तो in that. यहाँ So श्रद्धा की जो here, बात हो रही है वो the आध्यात्मिक श्रद्धा Shraddha की है। that is इसलिए being आध्यात्मिक discussed, श्रद्धा में that is विश्वास, spiritual, विश्वास के spiritual साथ faith, में थोड़ा आदर रहता है। and it भौतिक is श्रद्धा also में हम accompanied विश्वास with करते हैं respect. तो उसमें हमारी When we आदर भी have कहीं faith ना कहीं in रहती है, material केवल subject, विश्वास there नहीं is होता है। no respect in that. It is जब just नौकरी भी faith. करते हैं तो आपका If विश्वास you है are working somewhere, कि so you मंथ have के अंत faith में that at the end of आपको the मिल month, जाएगा। I will get the ऐसा salary. थोड़ी कि आप उनकी कुछ But that does not लाघव mean दृष्टि से देखते हैं उन्हें। that you see them तो very यहाँ श्रद्धा का respectfully. अर्थ होता है कि हमारी So कुछ here, आदर का Shraddha भाव रहता means है विश्वास के साथ। having this feeling of faith और with respect. ये श्रद्धा And this भौतिक Shraddha आध्यात्मिक दोनों प्रकार की होती है। भौतिक के भी is 3 of विभाग हैं, both material and spiritual types. सात्विक श्रद्धा, Material has राजसिक श्रद्धा again और three तामसिक divisions: श्रद्धा। Sattvic, Rajasic, and Tamasic Shraddha. तो इसके अनेक विभाग हैं और फिर So it आध्यात्मिक has श्रद्धा, many divisions, and then there is श्रद्धा संख्या spiritual 4 की Shraddha श्रद्धा that से also भाव can be की further श्रद्धा कर्म की subdivided. Your Shraddha ज्ञान is की in the personal form or impersonal or कुछ in भगवान Dvaita में, or तो Advaita उसके अनेक or विभाग which form of Bhagavan. So again, so it can be subdivided in many मनुष्य जो categories. है वो But श्रद्धा से ही human चलता है। being functions on Shraddha इसलिए only. भगवान गीता में That's कहते why हैं in कि Gita श्रद्धावान Bhagavan पुरुष says, सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयम अयो पुरुष, श्रद्धामयो अयम पुरुष यो यत् श्रद्धा स एव स, कि हमारी श्रद्धा जो है वो हमारे सत्व यानी कि हमारे हृदय के अनुसार होती है। so our जो Shraddha हमारा is हृदय होता है, according to our heart, यानी कि according to the जिसके state जो of our संस्कार heart, हैं, पाप meaning संस्कार हमारे according हैं, to the samskaras that we have. या कुछ पूर्व जन्म की Some वासनाएं हैं, samskaras are we तो get उसी some के अनुसार samskaras हमारी from श्रद्धा होती है। parents or previous life. तो Accordingly, मनुष्य जो है वो we have श्रद्धामय ही है, वो Shraddha. श्रद्धा से ही And चलता है। human being is made of Shraddha, like made of इसलिए Shraddha भगवान यहाँ only. तक कहते हैं यो यत् Bhagavan even श्रद्धा स says, एव स, कि जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो वही है, whatever Shraddha one has, और उसी के that अनुसार फिर वो that कार्य person is करता है, that like that only. उसी के अनुसार वो कार्य करता है। And he functions तो like that ऐसा नहीं है only. कि श्रद्धा हमारी एक जैसी रहती है And it is हमेशा, not that श्रद्धा our हमारी Shraddha is always बदलती रहती same है। only. Our Shraddha keeps on changing, हम जैसे हमारा वातावरण बदलता है, जैसा संग just बदलता like है, our environment उसी प्रकार हमारी श्रद्धा भी changes. बदलती
our association changes. Accordingly, our Shraddha also changes. So, like Bhagavan Kapila says, रसायन कथा तज्जोषनादासु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा भक्ति रतिर अनुक्रमिष्यति श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो कहते हैं कि जब आप सत्पुरुषों का सत्संग करते हैं, साधुओं का so सत्संग he करते says that as you do satsanga of the हैं, सत्संग sadhus, से आप उनकी कथा सुनते हैं and और with जब that कथा का satsanga, सेवन करते हैं तो उसका सेवन करने से आपके हृदय you में hear शुद्धि katha, होती है, and as you hear katha, you विचार get बदलते हैं purified, और उससे your सबसे thoughts पहले change. वस्तु प्रकट होती है आपके हृदय में, वो श्रद्धा है, यानी कि उनकी बातों में आप Then कुछ the विश्वास first thing करते that हैं, appears in your heart is कि Shraddha, हाँ ये ठीक है, meaning you have faith इसके अनुसार in फिर the आप अपना statements. आचरण बदलते हैं। And then with that Shraddha, तो you श्रद्धा change का your यही तरीका है। behavior, your भक्ति की character. श्रद्धा भी इसी तरह आती है। So material Shraddha is also like this only. कोई शाकाहारी है लेकिन वो अगर मांसाहारी लोगों If के साथ somebody जुड़ा is तो उसका vegetarian, तो धीरे but धीरे उसकी he बात सुनते associates with others who are non-vegetarian, जैसा बन जाएगा वो भी। then by associating with them, he will also become like them. लेकिन Or ऐसे लोगों के साथ suppose जो somebody is मद्यपान करते हैं non-alcoholic, तो but उसकी if he श्रद्धा भी हो associates with जाएगी, people who are addicted to alcohol, so he तो will संग also से ही become like होता them. है। So it happens by sangha, by association. इसलिए जैसे अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि एक व्यक्ति का आचरण जो है वो So उसके man is संग known से by the पता company लगाते he हैं, keeps. उसका आचरण या उसका गुण, उसका चरित्र। तो ये संग से इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। So association affects a lot because our mind, वो संग से प्रभावित होता है। it gets affected by association. आधुनिक मनोविज्ञान ने भी ये पता लगाया कि हमारे जो ब्रेन है उसमें Modern इस psychology प्रकार की कोशिकाएं has also found out जो that दूसरे को देख के there are उसको cells उसी का in आचरण our करने brain लगती हैं, which जिनको हम imitate others' न्यूरॉन्स behavior. कहते हैं। They are known as monkey neurons. तो ये हमारा भी अनुभव है। So we also have this इस experience प्रकार का जैसा होगा संग वैसा होगा that as we associate, accordingly we इसलिए become. श्रद्धा उससे आती है। So this श्रद्धा is ही from where we मूल get है। Shraddha. कौन किस And बात पर Shraddha is the चलेगा, main thing. ये Who उसकी will श्रद्धा walk पर on which निर्भर path? करती है। It depends on that person's तो Shraddha. इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं कि So Sri Rupa भक्ति मार्ग Goswami का also पहला says कदम that तपस्या on the है, path of फिर bhakti, श्रद्धा है, the आत्मनिर्भर first है, ladder साधु is संगति ज्ञान Shraddha. क्रिया। तो श्रद्धा प्रत्येक मार्ग में चाहिए, जो जिस भी So मार्ग पर Shraddha is चलता है required on उसमें every श्रद्धा path. तभी वो चलता है। लेकिन भक्ति मार्ग में श्रद्धा का विशेष महत्व है। So in bhakti path, और उसका कारण Shraddha ये है is कि भक्ति especially जो अलौकिक वस्तु है, important कर्म तो because पृथ्वी bhakti की is कुछ चीजें हमारे transcendental. सामने दिखाई देती हैं, Other objects still we can see in front of us. लेकिन यहाँ तो पूरा ये भगवान का विग्रह है, ये भगवान ही है, तो देखने में तो सामने पत्थर की मूर्ति So आपके सामने here दिखाई we है, see लेकिन पत्थर नहीं we है, see the vigrah of तो Bhagavan in श्रद्धा front ही of करनी us. पड़ेगी So उसमें। now we may feel प्रत्यक्ष में that कह this is सकते हैं, just a हमारा piece अनुभव of हो जाता stone, है। but then we hear तो that this इसलिए is श्रद्धा Bhagavan जो है himself, वो not just stone. महत्वपूर्ण है। So then it needs और Shraddha. जितनी Shraddha is श्रद्धा required. के भी अलग अलग स्तर हैं, Shraddha also has different तो levels. जितनी गाढ़ हमारी श्रद्धा होगी उतना So the हमारा मन जो deeper है वो the संग से our हिट होगा, Shraddha, और the उतनी हम more तत्परता से our mind will be free कार्य of करेंगे। doubts. And इसलिए then कहा we will श्रद्धावान act with युक्त enthusiasm. तत्पर है संयतेंद्रिय। श्रद्धा के यहाँ पर दो प्रभाव उन्होंने बताए हैं श्लोक में। So एक तो here हमारा in this हृदय verse, he has स्थिर है, spoken about two effects, कि two जैसे results श्रद्धा of होगी तो Shraddha. व्यक्ति One is जो that भी उसका if there is मार्ग है उसमें Shraddha, वो तत्पर होकर whatever के path निकलेगा, he is following, बड़ा he will become enthusiastic in मनोयोग that. से अपने मार्ग पर वो चलेगा, अपनी साधना करेगा, He तत्परता will do के साथ, sadhana माने enthusiastically. उसमें लगा रहना, He will immerse himself in that वो उसको अच्छा sadhana. लगेगा, He will like that. उसको कोई वो बोझ या भार दिखाई नहीं देगा। He will not feel it as और some दूसरा ये है burden. कि उसकी इंद्रियां संयत हो जाएंगी And another is his श्रद्धा के senses कारण। will क्योंकि become जब हमारी controlled श्रद्धा due होगी, to this शास्त्र Shraddha. शास्त्र कहता है कि मद्यपान मत करो, या कहता है लहसुन Shastra प्याज मत says that खाओ, don't drink liquor,
don't एकादशी का व्रत uh, करो तो फिर हम don't अपनी eat इंद्रियों को उस तरफ onion, garlic, do Ekadashi Vrat. करेंगे। So then accordingly we control our senses. तो उन चीज़ों को हम जो शास्त्र में जिनके लिए मना किया है, तो शास्त्र So में whatever has been forbidden निषेध किया है in Shastra, तो उनको हम नहीं करेंगे। then we will not engage in those activities. तो इसलिए ये दो प्रभाव उसके होते हैं श्रद्धा के, क्योंकि श्रद्धा का वास्तव में अगर अर्थ देखा है तो वो यही है, श्रत और धा। So if you see the word Shraddha, it is made with Shat and Dha. और धा का मतलब होता है धारण करना या स्थित होना। तो श्रद्धा का मतलब होता है सत्य में स्थित हो जाना। Shraddha means to be situated in Satya, in truth. So when we have Shraddha in the Shastra, Shastra gives the path, tells the path of truth only. So then our Shraddha is in that only. Then we do not run towards asatya or what is false. और फिर जिस प्रकार की श्रद्धा होती है उसी प्रकार का हमको फल मिलता है। And then according to our Shraddha, we get the result. तो जितनी गाढ़ श्रद्धा होगी उसी प्रकार का हमको फल भी मिलेगा। So the deeper is our Shraddha, the better we will get the result. So like Ekalavya story, so he went to Dronacharya. तो द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया कि क्योंकि वो कौरवों को Dronacharya refused ये विद्या सिखाते थे और वो राजा because he used to teach और the ये जो भील का Kauravas, and उनके साथ this was the son of a Bhil. चाहते थे, So he did not want to teach उसको this भी person. परेशानी होती, उनको भी परेशानी होती, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको मैं नहीं सिखाऊंगा। It would have been a trouble for both. लेकिन So एकलव्य Dronacharya refused to teach Ekalavya, द्रोणाचार्य को ही गुरु but मानते थे। Ekalavya had accepted उन्होंने Dronacharya as guru in his के heart. सामने वो अभ्यास So करते थे, he इतनी made a murti गहरी of श्रद्धा Dronacharya. In front of that, he was अभ्यास करते करते वो practicing. धनुर्धर He बन had गए। very deep faith, and then he became a इतने great धनुर्धर archer, बन गए कि and अर्जुन he को ही became such a आश्चर्य great हुआ। archer that एक दिन वो even Arjun was अभ्यास कर surprised. रहे थे तो कुत्ता भौंक Because रहा one था, day तो उन्होंने कुत्ते के मुंह में तीर इस when प्रकार Eklavya से was मारे, practicing, he found a dog barking. मुंह बंद So नहीं कर he सकता, shot the arrows in such a way in the dog's mouth that it was कष्ट नहीं हुआ, stuck समझ with गया the तीर जाके arrows in such a way that छेद कर रहा है, just he was not able to bark, but the arrows were not piercing his mouth or giving him हाँ या pain. मुंह Not like वहाँ that. पर घाव बना रहा है, ऐसा नहीं किया। He did not do that. He did इतने not cause any pain to the dog. नियंत्रण से बाण उन्होंने So छोड़ा he shot the arrow in कि such बाण a वहां पर जाकर controlled रुक गया बस, manner that the और फिर arrow दूसरा छोड़ा went तो and just तीसरा छोड़ा तो stuck in a place so that the तो dog वो could not कुत्ता जो bark, है वो but he was not गया कौरवों की तरफ, और feeling any अर्जुन ने pain देखा also. तो वो बहुत And when he आश्चर्य went हुआ towards कि the कैसे Pandavas ये and Arjun saw, वो तो धनुर्धर है तो वो so जानता he है was surprised कि that इसमें who did this ऐसा तीर because चलना Arjun was such a great कला archer. चाहिए, So he was wondering that it needs तो वो such कुत्ते tremendous को skill to shoot पीछे arrows छुड़ा like के this. So he was wondering who ऐसा did है, this. So when he was going behind the ऐसा dog करते and he करते वो saw अभ्यास कर रहा Eklavya, था, फिर and उन्होंने that time सोचा कि Eklavya was मेरे practicing, गुरु so को he पहचान asked करना Eklavya, who is चाहिए, your guru? तो उनको बड़ा Eklavya आश्चर्य हुआ responded कि that द्रोणाचार्य जी Dronacharya हैं, is my तो guru. द्रोणाचार्य तो So क्या he was wondering that मेरे से श्रेष्ठ how गुरु can हैं, मेरे से Dronacharya be his श्रेष्ठ guru, मेरे से because श्रेष्ठ हैं। he had heard from Dronacharya तो तभी वो that द्रोणाचार्य को जाके बताया कि Arjun was his ऐसा best आपका कोई disciple, शिष्य है, but आप Arjun found चुपचाप somebody हो गए। greater than him तो also. नहीं यार हमें नहीं सिखाते। So Arjun told Dronacharya that what तो is this? द्रोणाचार्य ने कहा You are नहीं secretly नहीं teaching him, है ऐसा, but we don't know. So Dronacharya said that तो I यहाँ don't have any such दिखाया disciple. यही है कि So we know that किस story. प्रकार से So here what is श्रद्धा being के shown कारण से is उन्होंने सिद्धि that प्राप्त की, by Shraddha, how Ekalavya और इस achieved प्रकार की perfection. श्रद्धा जब होती है So when you have तो this फिर type of शास्त्र का Shraddha, अर्थ प्रकट होता है then you और उसका अनुभव होता है, then you realize कहानियाँ Shastra, then you understand the meaning of कहानियाँ नहीं Shastra. है, So these वास्तविकता है, stories are not just stories, they are reality. और इन चीज़ों को हम केवल And भौतिक दृष्टि से या अपने भौतिक तर्क से नहीं समझ सकते। we can't understand this श्रद्धा just by में our ऐसी material अचिंत्य logic. शक्ति है Shraddha has such a
inconceivable power that it can give this experience. So there are many stories like this. Bhagwan's Vigraha, if you see, it will just appear like an inert stone. But actually, that is not stone, that is Bhagavan only. And the more we have Shraddha in the Vigraha, then accordingly we will experience. That is why ज्ञानम तो ज्ञानम का मतलब यहाँ कोई शाब्दिक ज्ञान नहीं है, मतलब अनुभव. so here it is not just referring to theoretical words but experience. और श्रद्धा के अनुरूप According to Shraddha, we will become enthusiastic. हमने भक्ति संदर्भ में ही पढ़ा था. We had studied in Bhakti Sandarbha also that when somebody commits offense, then Jiva Goswami ji, he told about the result of offense. So the first result is that he loses Shraddha. फिर उसके बाद में कहते हैं भक्ति शैथिल्य, कि भक्ति की जो क्रियाएं हैं उनमें शिथिलता आती है. वो मनोयोग So then he becomes slack in sadhana, in activities of bhakti. He doesn't do it with full mind. भक्ति के विरोधी चीजें उनमें उसका श्रद्धा निष्ठा हो जाती है. So he starts getting Shraddha or Nishtha in those things which are opposed to bhakti. होगी तो उसमें आप दृढ़ता से काम करेंगे. जब When you have Shraddha, you act with determination, with full faith. शब्द का प्रयोग किया Otherwise, you become slack. कैसे श्रद्धा के कारण तत्परता. That's why Bhagavan used the word tatpara to show how by Shraddha you become enthusiastic तो जब श्रद्धा होगी तो फिर वो दुराचार and your senses become regulated. क्यों? क्योंकि उस Then you will not commit wrong activities. Because due to Shraddha, you will not like doing wrong activities. Your Shraddha will forbid you from, will stop you from doing wrong activities. तो ये दोनों इसका फल यहाँ पर बताया है. So here the result is explained. उसका वास्तविक फल तो ये है कि The main result is that he will achieve supreme peace. पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति. तो जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उसका क्या So होगा? when he gets this knowledge, then he gets supreme peace. उसका मन शांत हो जाएगा और यहाँ His mind will become peaceful. वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा And peaceful means that he will not do any activity that will implicate him in bondage of karma. Here Param Shantim refers to liberation. Because in Gita, in the earlier also Bhagavan had said that when a person achieves Shanti or peace, निर्मम निरहंकार से शांति में भी गच्छति. कि जो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, when the person becomes nishkama, selfless, कामनाओं को छोड़ के निष्क्रिय होकर चलता है, निर्मम, by giving up all desires, when he works, then he achieves Param Shantim. There also Shanti word is used. And in the next verse, he had said that this Shanti is Nirvana or liberation. So Enam means here this Shanti, which is the Brahmi Sthiti. So this is called Brahma Nirvana or Moksha, meaning such a person, he will become Jivan Mukta. He will attain the state of Jivan Mukti. Achirena means, in the previous verse, he said that it will take time. So that was the state of sadhan. When he is doing the sadhan of Karma Yoga, then he will take some time. आगे तो उसमें देर क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आप why it will not take time? Why there will be no delay? Because his ajnana, his ignorance will be removed immediately. So like there is a dark room, and if you bring light,
अंधकार को दूर करने में कितना समय लेगा प्रकाश? then how much time will light take to remove the darkness in the room? Will it take 5 to 10 minutes that you bring light and then slowly it will throw the darkness away? Or if a room is small, then 5 to 10 minutes, or if it is big, then half an hour, or big hall, then 2 to 4 hours to throw away the darkness, because there is so much darkness. It will take time or no? Similarly, there is so much of ignorance within us. So when we get jnana, knowledge, then it will slowly, slowly remove the ignorance, because so it is not like this. It will be removed immediately. It doesn't take time. Adhigachati means he will attain that immediately. He doesn't have to go anywhere. He attains that. So this is the glory of jnana that Bhagavan speaks of here. Because the main problem is due to sakamata. So he understands this, that nothing will happen by this. So as long as a person is in ignorance, he is like a beggar. He has a lot of property, but he is not giving importance to that, and he is begging around. So there was a beggar. So he was in sorrow, suffering. Nobody was giving him alms. So he met a sadhu. And the sadhu asked, "Why are you in so much distress?" He said that I don't have anything to eat. And you must have seen beggar. They speak in such a way to evoke so much compassion. So the said, "You have a lot of wealth. Why are you making fun of me?" So sadhu said, "No, you have lot of wealth. I know that." So first the beggar thought that maybe he is joking, but because I am such a poor person, so the sadhu said, "Okay, come with me. I will show you where is your wealth." So he caught hold of the beggar and he took him to a big merchant, wealthy merchant. He was acquainted with that merchant initially, from earlier only, and the merchant knew that the sadhu speaks very intelligently. So he understood that if the sadhu has brought this poor person, he will play some tricks. So he welcomed the sadhu, made him sit, and the sadhu said that this person, he wants to sell something. The beggar thought that I am a beggar, I don't have anything to sell. This person is fooling around with me. So the merchant said, "Okay, sell, I will buy." So the beggar said that the sadhu said, "Okay, you have just two eyes, he can sell." So he told the beggar, "Okay, you give the two eyes, you are a beggar, I will give you 5 lakhs." So the beggar ran away from there. He said that, "No, I don't want to give my eyes." So the point of the story is that this body that we have received, it is very important, and we can attain the topmost thing, that is Bhagavan. But if, like a beggar, we keep running around here and there begging, because these material desires, they make us beggar. The more we have material desires, the bigger the beggar we are. Because we are just begging around, I want this, I want that. And our real wealth, this material, this human body, even devatas crave for this body. They wonder what these human beings have done, that they have got this human body, because even devatas, they cannot achieve this.
what to speak of the तो वो इसी asuras. प्रकार है कि हम इस अपनी So it संपत्ति is का like अनादर करके we करते हुए have घूमते this हैं, property and we are उसके not पालन सही valuing करते हैं, it. लेकिन We अपने don't recognize its value. We run around जीवन here को and नहीं there जीते begging. हैं। तो ये ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है हमको, So when we get this knowledge, अमीर बन जाते हैं, हमारे अंदर we दरिद्रता नहीं रहती, we become wealthy. फिर वो We do दारिद्र्य का not, we भाव are नहीं no आता, more चाहे हमारे पास कुछ beggar भी ना हो, anymore. फिर We हम don't बहुत feel like that. Whether we have something or no, शहंशाह हैं। whether we have or no, but we do never feel like a beggar. हिंदी में कहावत है ना कि We are काल की the इच्छा king गई, of kings. तृष्णा गई, मेरे को पूरा याद नहीं है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि So जब it is said in इच्छाएं Hindi, समाप्त हो which जाती हैं तो means व्यक्ति that when महाराजा हो जाता desires है। are साधुओं को finished, महाराजा कहते हैं the ना, महाराज। person is साधु के becomes पास a कुछ भी king. ना हो तो Like लोग sadhus are उनको addressed as महाराजा ही Maharaj. कहते हैं। If the sadhu may not have anything, तो but but people महाराज address जी them as Maharaj. So what type of Maharaj or king are they? और They have given up the material desires, महाराज जी है। and that's why they are addressed as उसी Maharaj. का महत्व यहाँ पर भगवान बता रहे हैं So कि Bhagavan is संसार करने explaining पर the importance of that only आनंद here. मिलेगा वो It व्यक्ति is को, so important that when the उसको परम person gets शांति this मिलती है, knowledge, क्योंकि शांति he तो will है ही पहले से get ही, मोक्ष कहीं से supreme लाना नहीं है। peace, because peace is already there. You don't have to ये bring जो liberation बंधन from जो है ये anywhere. माना हुआ This है, bondage is वास्तविक also आत्मा something we have जिसको just समझने का assumed नहीं or है, accepted. Actually, there is no इसको भगवान यहाँ bondage. पर समझा रहे हैं। So that is what Bhagavan तो is प्रवचन teaching को here. यहाँ पर We will समाप्त करते stop हैं, here. किसी को कोई If प्रश्न you हो have तो any पूछ सकते question, you can ask. धीरे ललित जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। Radhe Radhe हैं। Babaji, हिंदी में बोलो, thanks for a wonderful class. हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। Maybe I will not manage. It's such a technical subject matter. I don't have that kind of vocabulary. So, Babaji, the subject of Shraddha is so technical, it's so subtle, and it's something we're all aspiring for. You said that knowledge is most purifying, but unless it has the catalyst of Shraddha, it really doesn't take hold. And we understood from the talk here that actually if we do aparad, then our Shraddha wanes, it slackens, it weakens. And then, we become weak. So this knowledge doesn't have a hold on us. So just like if we can do something to weaken our Shraddha, is it possible to do something to actually gain Shraddha? Because sometimes in Gita, we see Bhagavan saying that, I give them Shraddha to worship the demigods, I give them the Shraddha to worship the ghosts and spirits. So what can we do, or can we influence a person to get Shraddha in this knowledge? Otherwise, this knowledge is just useless on its own. So is it possible for us to do something to actually strengthen our Shraddha? That's my question. Thank you. तो उनका प्रश्न ये है, मूल बात ये है कि श्रद्धा So कैसे his प्राप्त, question mainly is how do we get Shraddha? तो श्रद्धा प्राप्त करने का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, So the best way, है most important method of getting सताम Shraddha संग, is Satam साधु Sangha, संग करना। Sadhu Sangha. और साधु संग का मतलब ये नहीं कि उनके And पास Sadhu बैठ के Sangha does बातें not करना, mean just लेकिन sitting with them and gossiping, शास्त्र श्रवण करना, but it means जो भी hearing हमारा Shastra मार्ग है from them, whatever is उसके our विषय path में जिज्ञासा करना। regarding that भगवान ने कहा subject, तद्विद्धि प्रणिपाते, questioning the sadhus, hearing from them. और उनकी सेवा करना। Like Bhagavan said, Tadvidhi Pranipatina, and then also साधु serving the संग, sadhu. और साधु संग So का Sadhu जो Sangha, and अंग है वो है श्रवण, the main element of और Sadhu सेवा। Sangha is Shravan ये दो and चीज जो doing है seva to the sadhu. श्रद्धा के बहुत ही These two things, these are महत्वपूर्ण उपाय हैं। very important methods of और जैसा getting मैंने कहा Shraddha. भी था कि And as I इस प्रश्न said में भी हमारी earlier श्रद्धा जो है also, वो संग से ही that जुड़ती है, in material subject also, और we इसलिए get हमारे Shraddha शास्त्र to में Sangha श्रद्धा का only, इतना महत्व association दिया only. है That's why in कि our हम इसमें Shastras, साधु संग Shraddha is सर्व given so much शास्त्र है, importance. लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। और भागवत में भी कहा है कि क्षण मात्र संग जो है In Bhagavatam also it is said उसके लिए that उसके सामने for मुक्ति भी कुछ नहीं। Mukti, liberation is also nothing compared to नाम a moment of association with 11वें sadhu. स्कंद में भगवान भी कहते हैं इस बात को कि In 11th canto सबसे also बड़ी Bhagavan पूंजी है। says that this is the biggest wealth, the sadhu sangha. So,
ते वही छिदन्ति, वही लोग आपका छेदन कर देते हैं संशयों का, और आपके अंदर श्रद्धा का प्रवाह होता है. So they destroy your doubt, and then Shraddha is infused in you. श्लोक 11वें स्कंद में आता है. और कोई? परमानंद जी पूछते हैं कि Question: आपने बताया कि You किसी explained भी that Shraddha is spiritual important on path any में spiritual path, और and that श्रद्धा Shraddha comes from samskaras, association, and following Shastra, का अनुसरण करने से आती है and one can और कोई व्यक्ति lose अपराध Shraddha करके due to इससे some दूर भी offense. सकता है. Are there तो any क्या other ways श्रद्धा को विकसित करने के लिए कोई than और these उपाय that है one gains और Shraddha, हमें and किन what are the किन offenses अपराधों से that बचना we should चाहिए? avoid? तो उपाय तो मैंने अभी बताए. So I already just now I said that what is how to get Shraddha by sadhu sanga, सेवा, hearing Shastra, and doing seva. पूर्ण उपाय है इसको These प्राप्त are करने the के लिए. important methods और to जो get अपराध, this. मुख्य अपराध है शास्त्र की The निंदा करना, main शास्त्र offense की निंदा is करना, offending वैष्णव की Shastra, निंदा करना, criticizing गुरु आज्ञा Shastra, करना, Vaishnavas, ये सबसे भयंकर अपराध है. इनसे अवश्य disrespecting Guru. These are the most dangerous offenses. करते रहते You हैं. should definitely बहुत avoid this, सामान्य है, and बहुत कॉमन people अपराध do है, it very commonly, regularly, बहुत भयंकर अपराध है. and this is very dangerous. अपने अहंकार के कारण हम करते हैं ऐसा. Due to our ego, दूसरों we को do मान्यता ही this. नहीं देते. Due to our pride, we do अपने this. से We बड़ा don't कोई तो respect समझते ही others. नहीं है. We don't कोई हमसे think कीमती that somebody can be better or greater than us. बड़ा व्यक्ति हो, No matter how much somebody is ज्ञान में बड़ा bigger हो, than us, whether उसका in नहीं मानता age है, or sadhana उसको or नहीं knowledge, तो ये अपराध का we कारण बनता है. don't give any importance to that person. So this is the reason for aparad. प्रश्न है कि 4.38 श्लोक में जो योग शब्द है वो कर्म योग में भक्ति के लिए प्रयोग होता Question: है या केवल कर्म योग के लिए? In यहाँ the yoga here नहीं refers है, to karma yoga or विषय only भक्ति karma नहीं है. yoga? So answer here it refers to karma yoga because that is the subject, but you can प्रक्रिया तो उसी प्रकार है refer, जैसे मैंने कहा कि it can भक्ति also को indicate श्रद्धा से bhakti याद also, करना है. because as I said, और in श्रद्धा bhakti होगा तो bhakti कर्म also योग begins से with कर्म shraddha, होगा. श्रद्धा because होगी if तो there is उसको bhakti अनुभूति shraddha, then there will be मिलेगी. he'll be enthusiastic, he'll get श्रद्धा से experience. आरंभ होता है, तो प्रक्रिया एक जैसी Begins है. with shraddha only. यहाँ श्लोक में The विषय process is same, but नवदीप जी का दूसरा प्रश्न है कि क्या हम अपने प्रियजनों के साथ आत्मा के स्तर पर जोड़ सकते हैं ताकि हमारा जो संबंध है वो शाश्वत हो question: और can we connect with our dear ones at a level of soul so that आत्मा our के स्तर relation पर is आपका eternal and संबंध not temporary? क्या प्रक्रिया Question: है? how do you connect at the आपकी level आत्मा of को देखा atma? नहीं है, What is the method? Have you आपने seen अपनी their नहीं atma? देखी है. You have not seen yours also. हमारा सारा व्यवहार जो है वो शरीर से All ही है. our जिनको behavior आप is बस at the में अभी level of कह रहे हैं body उसका मतलब only. ये तो शरीर से ही Those है. who are referring, whom you are considering as your शरीर को छोड़ के relatives, आत्मा से the संबंध नहीं relation है. is with the body only. What is the relation आत्मा से between the संबंध two बना है तो atmas? टूटेगा नहीं कभी. If the relation is शरीर से भिन्न हो established ही नहीं between the सकता तो सारा atmas, then संबंध it तो will शरीर never से ही break. है. But how will you make that? Because the relation is with the आत्मा body आत्मा का only, संबंध सीधा हो नहीं सकता है. and atma and atma cannot have direct connection. Our हमारे connection can माध्यम be से with सीधा with संबंध है. Bhagavan, and we via Bhagavan we can have जिस relation with कंपनी में others काम also. करते हैं, When you are working in a आपके साथ में company कोई आपका and you सहयोगी have a है, colleague, नौकर है, तो उसके साथ में आपका so संबंध you do not वास्तव have में direct सीधा संबंध नहीं relation है. with that person. संबंध इसलिए है कि आप उस Your कंपनी में, relation is आप because जिस you are कंपनी में working in काम the करते हैं वो भी company. उस कंपनी में You काम are करता working है. in the इसलिए company, he is संबंध also working in the सीधा company, so होता you है. are related. Directly you have सीधा no संबंध relation. कहेंगे नहीं जी, हमारे तो आपस में मित्रता, वो मित्रता उसी के You कारण may है. say that we are friends, but that is also because both of you कोई are छोड़ के working in चला the जाता same है तो अपनी company. मित्रता रखते If हैं, he तभी leaves तो उसी and का कारण है. still remains your friend, still the friendship was established due to that only. यूट्यूब से एक प्रश्न है कि हम साधु सेवा कैसे कर सकते हैं जब हम भौतिक रूप से किसी साधु के पास नहीं रह रहे हैं? अब ये तो मुश्किल When we काम are है. living with the sadhu, then how to do sadhu पहले तो seva? आप देखें कि Answer: कोई साधु है. that is difficult for me to say. First of all, आवश्यक you होता है तो आप check who is sadhu, केवल and then you check if he has some धन से needs. सेवा कर सकते हैं, You can maybe help with money. कुछ You can do आवश्यकताएं हैं seva with उनकी पूरा money. कर सकते He हैं, may have some needs. You can उसके लिए fulfill सेवा भी those कर सकते needs. हैं. You नहीं may कर not सकते be हैं. able to do with body, but you can do this much. नवदीप जी का एक और प्रश्न है
Question: Did Dronacharya act unjustly toward Eklavya by asking for his thumb as Guru Dakshina, even though he didn't consider Eklavya as his disciple? If not, what reasons could justify his request? क्या अनुरोध को अनुशंसित ठहराने? एकलव्य जी से द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा मांगा था, तो अगर ये गलत नहीं है तो ऐसा क्या कारण है कि ये गलत नहीं है? तो सीधा प्रश्न पूछो ना कि उन्होंने जो अंगूठा मांगा है ये ठीक है कि गलत है? गलत क्यों नहीं? तो गलत और So सीधा you should ask question directly whether it was right or wrong. ये जो शिष्य और गुरु है उनके ऊपर निर्भर करता है. So it is right or wrong, it depends on the guru and disciple. It doesn't depend on you. We start making conclusions according to our own understanding or vision. But the guru disciple relation is between them. So who are you to decide that it is right or wrong? शिष्य जो है वो प्रसन्नता से अपना अंगूठा दे रहा है गुरु. The disciple is happily giving his thumb to Dronacharya. So who are you to decide or conclude that it is wrong? So Guru is asking. तो यही तो बात आती ना, हमारे गुरु में श्रद्धा ही नहीं है, इसलिए हमारे We don't have Shraddha in the Guru, that's why we don't understand only. We do not have any Shraddha in the Guru actually. इसलिए तो कहानी दिखाई है कि कितनी This is why this story is shown here, that how much Shraddha he has. अंगूठा तो हमको कैसे पता चला? If the Guru would not have asked for the thumb, then how would we have understood that Eklavya had so much Shraddha in his Guru? If there would have been no Ravan, how would you have understood the glory of Ram? He would have become king. If there would have been no Kaikai or Manthara, Bhagavan Ram would have become king and he would have just ruled. Then there would have been nothing to teach. So Ravan, it was Ravan who showed his glory. So Eklavya had such deep Shraddha. This is what Dronacharya showed, that is something you cannot understand because we do not have Shraddha. So we think that, oh, it was such an unjust, wrong thing that was done. The story of Eklavya that you are hearing today and what your logic you are making, that is what Dronacharya showed, that he is such a great devotee of mine. I am not accepting him as my disciple, still he is giving his thumb to me. For that only Bhagavan is speaking here. So first of all, understand what is Shraddha. I am not blaming anybody, but where is our Shraddha? Do we have Shraddha? This is Shraddha. और ये श्रद्धा दिखाने के लिए ये कहानी महाभारत में दिखाई गई है. नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा श्रद्धा होती क्या है? और हमको तो Otherwise, how shall we understand what is Shraddha? Even now we don't understand what is Shraddha. We are still not trying to understand what is Shraddha. We expect that it should be explained logically to us, what Eklavya did, how it was right. And then it will be said later that Eklavya fought on the side of Kauravas, and Dronacharya knew, and he was such a great warrior. Dronacharya knew that he would be fighting from the side of Kauravas in future. Dronacharya knew that, so he asked for the thumb. So he knew that he would be supporting, Eklavya would be supporting Kauravas. So all that explanation is also given, but I am explaining another angle, that here it is being taught that you should understand what is Shraddha. His thumb was cut off. He cut off his thumb, but he did not lose any Shraddha. If his Shraddha would have been affected, he would have expressed sorrow. He never said that my Guru has exploited me. He happily gave that, and he felt very fortunate that he could please his Guru. He has asked something from me. So is it something small? And Guru is like Bhagavan. Guru is Bhagavan only. He is considering Dronacharya as Bhagavan only. So what is the value of a thumb? People lose thumb due to so many reasons. Body is temporary. He attained so much glory and fame by doing this activity.
आध्यात्मिक लाभ हुआ है। And not just about fame, he gained spiritual benefit by doing कर this. लिया तो और रह क्या गया फिर? When you have pleased the Guru, then what is remaining? What else remains to be done? When Guru is pleased, Bhagavan is pleased. This is Shraddha. ये तो कहा है कि यादृशी This भावना is told here. भवति तादृशी। ये तो हमारे भारतीय संस्कृति का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जो किसी दूसरे धर्म में है ही नहीं। ये गुरु शिष्य का संबंध और कहीं नहीं है ये। So this is the glory of Indian culture. The relation of Guru and disciple. It is not found in any other culture. This is transcendental. गुरु जी जय श्री कृष्ण। हाँ गुरु जी, जो ज्ञान प्राप्त होता है, Question. ज्ञान चला जाता है, When we get knowledge and we lose ignorance, the ignorance is lost. So when we get that gyan, is it permanent or again we may lose it? So answer, no, it is permanent. Once you get the light, it is permanent. There is no question of falling in ignorance again. So question, how will I understand that I have got gyan? The answer, when you will get it, then there will be no need for you to ask. Like if you are hungry and you are eating food, so how will you understand that your stomach is full? Will you ask somebody else that your hunger is satisfied? You will experience yourself. So when you will get knowledge, there will be, you will not ask whether I have got received gyan or no. When you put your thumb in the fire and it has burnt, will you ask somebody that please tell my thumb has been burnt or no? How will I understand that my thumb is burnt? Will you ask like this? No. ये तो स्वयं इसलिए कहा ना आत्मनि विन्दति। जो श्लोक में भगवान ने कहा ना तत्स्वयं योग संसिद्ध है कालेन आत्मनि विन्दति, आपकी आत्मा में ही होगा वो तो, उससे गहरी चीज तो और कुछ है ही नहीं। So Bhagavan said himself that it will be in your atma only. Nobody else has to tell. हो गया। चलो प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं
नमामि हरिं परम। हरि ओम तत्सत।